Hello students, now we'll discuss instruments of monetary policy. Instruments of monetary policy. Fiduciary or paper money is issued by the central bank on the basis of computation of estimated demand for cash. On the basis of computation of estimated demand for cash. Monetary policy guides the central bank supply of money in order to achieve the objectives of price stability. क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है? प्राइस स्टेबिलिटी, या तो लो हो जाए या फिर लो इन्फ्लेशन रेट हो जाए. ओके, देन फुल एम्प्लॉयमेंट and growth in aggregate income. This is necessary because money is a medium of exchange and changes in its demand relative to supply necessitate spending adjustments. To conduct monetary policy, some monetary variables which the central bank controls are adjusted a monetary aggregate, an interest rate or the exchange rate, in order to affect the goals which it does not control. The instruments of monetary policy used by the central bank depends on the level of development of the economy, especially its financial sector. The commonly used instruments are discussed below. कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की बात करें तो हम फर्स्ट वन इज़ रिजर्व रिक्वायरमेंट. द सेंट्रल बैंक में रिक्वायर डिपॉजिट मनी बैंक्स टू होल्ड अ फ्रैक्शन या कॉम्बिनेशन of their deposit liabilities. We can say reserves as vault cash or deposits with it. Fraction reserve limits the amount of loans banks can make to the domestic economy and thus limit the supply of money. The assumption is that deposit money banks generally maintain a stable relationship between their reserved holdings and the amount of credit they extend to public. ओके, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट एक टूल का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर. देन open market operations. The central banks buys or sells किसके बिहाफ पर? फिस्कल अथॉरिटीज़ के बिहाफ पर, जो कि ट्रेजरी है. सिक्योरिटीज़ टू द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग पब्लिक. अभी जो नॉन बैंकिंग पब्लिक हम कह रहे हैं, दैट इज़ इन द ओपन मार्केट. One such security is treasury bills. When the central bank sells securities, it reduces the supply of reserves. है ना? जब सेंट्रल बैंक सेल करती है सिक्योरिटीज, इट reduces the supply of reserves, and when buys securities by redeeming them, it increases the supply of reserves. ओके, वाइस वर्सा हो जाएगा ना. जब बेची हैं सिक्योरिटीज़ तो सप्लाई ऑफ रिजर्व्स रिड्यूस हो रहा है. अगर खरीद रहे हैं सिक्योरिटी तो व्हेन इट बाइज, ओके, तो रिडीम किया जा रहा है. इट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ रिजर्व्स to the deposit money banks, thus affecting the supply of money.
Then lending by the central bank. The central banks sometimes provide credit to deposit money banks. Deposit money banks, thus affecting the levels of reserves and hence the monetary base. The next one is the central bank lends to financially sound deposit money banks. So, what matters? Interest rate. ओके तो इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं. द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू फाइनेंशियली साउंड डिपॉजिट मनी बैंक्स एट अ मोस्ट फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए. कॉल्ड द मिनिमम रीडिस्काउंट रेट. व्हाट? मिनिमम रीडिस्काउंट रेट, दैट इज MRR. इस तरह की MRP होता ना, हाँ उसी तरह मिनिमम रीडिस्काउंट रेट है फॉर द बैंक्स MRR. MRR सेट्स द फ्लोर फॉर द इंटरेस्ट रेट regime in the money market. The nominal anchor rate, okay, nominal होगा, and thereby affects the supply of credit, the supply of savings, supply of credit and supply of savings, which affects the supply of reserves and monetary aggregate, and the supply of investment, which affects full employment and GDP. फिर डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल की हम बात करते हैं. द सेंट्रल बैंक कैन डायरेक्ट डिपॉजिट मनी बैंक्स on the maximum percentage or amount of loans, that is credit ceilings you can say, to different economic sectors or activities. Interest rate caps, liquid asset ratio, and issue credit guarantee to preferred loans. In this way, the available savings is allocated and investment directed in particular directions. This is direct credit control. The next one is moral succession. The central bank issues licenses or operating permit to deposit money banks and also regulates the operation of the banking system. ओके तो जो लाइसेंसिंग का काम का है इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है. और रेगुलेशंस का काम भी सेंट्रल बैंक करता है, मीन्स रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. It can from this advantage persuade banks to follow certain paths such as credit restraint or expansion, increased savings mobilization, and promotion of exports through financial support, which otherwise they may not do on the basis of their risk or return assessment. So it's a tool of moral succession. Then we'll talk prudential guidelines. The central bank may in writing require the deposit money banks to exercise particular care in their operations in order that specified outcomes are realized. Key elements of prudential guidelines remove some discretion from bank management
and replace it with rules in decision making. ओके, तो प्रूडेंशियल गाइडलाइंस होने ज़रूरी हैं. The next one is exchange rate. The balance of payments can be in deficit or in surplus. आपने पढ़ा है ना balance of payments. Okay, that can be positive or negative. ओके, तो डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है. एंड ईच ऑफ दिस अफेक्ट द मॉनिटरी बेस and has the money supply in one direction or the other. By selling or buying foreign exchange, the central bank ensures that the exchange rate is at levels that don't affect domestic money supply in undesired direction. ओके, फॉरेन एक्सचेंज की जो एक्टिविटीज़ होंगी उनसे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए डोमेस्टिक मनी सप्लाई पर थ्रू द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड द रियल एक्सचेंज रेट. द रियल एक्सचेंज रेट व्हेन misaligned affects the current account balance because of its impact on external competitiveness. Moral succession and prudential guidelines are direct supervision और qualitative instruments. यहाँ हम दोनों तरह की दोनों टूल्स की बात की है. हमने क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की भी और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की भी. तो जो मोरल सुसेशन है और प्रूडेंशियल गाइडलाइंस हैं are qualitative instruments, okay, and others are quantitative instruments because they have numerical benchmarks. ओके, इतना तो क्लियर है कि न्यूमेरिकली जो रिलेट कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे और जो नॉन मॉनेटरी कर रहे हैं वो हो जाते हैं लाइक हम उनको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते तो वो हो जाते हैं qualitative instruments. Okay, like moral succession that we have read. Okay, this is it. Thank you.